Okay, so this is what we want to do today. Today we will start learning again, and I guess we have used this function before as well. This is not something new. So today we are going to learn techniques about visualizing data. If you have some data, if you have some function and you want to visualize that function, you want to see that function, okay? So you can create plots, two-dimensional plots, three-dimensional plots in Octave or Matlab, okay? These plots, they allow you to plot functions, different functions, and view those functions as curves on an XY plane, or you can create a 3D plot in an XYZ plane, three-dimensional plane. So there are different types of plots. Today we are going to start using the very basic function, the plot function. It creates a two-dimensional plot. So there is an XY plane, and in that XY plane it draws you a set of points, and it connects those points with a set of lines or something like that. Okay? So we have used this plot, we have used this function. It is the plot function, and you can use it to plot a single vector, you can use it to plot a matrix, you can use it to plot two different vectors side by side, or you can use it to plot multiple functions on the same figure. Okay, so, and then we'll also learn about another function which is called the histogram function. So I hope you're aware of histograms. So histograms are basically frequency distributions. So if you have a certain data and you want to plot that, you want to plot a frequency distribution of that data, so you can do that by creating a histogram. Okay, so for example, if we have the census data for Pakistan, census data means after every 10 years the Federal Bureau of Statistics, it carries out the census, Murdam Shumari, what we call in Urdu, we call it as Murdam Shumari. So it counts, it actually counts the number of people in the country, and their ages and their income and the facilities that they have, and all kinds of information. And then that information is used for planning for the next 10 years or next 10 years. Okay, something like that. So once we have the census data, usually we want to look at that data from different perspectives. So one of the perspective is the age distribution of the population. Okay, so how many people are there below the age of 10, how many are there between 10 and 20, how many are there between 20 and 30, how many are there between 30 and 40. So we have these different age brackets, and we want to find the number of people in each bracket. Okay, so if you want to create such a plot, you can use the histogram to create such a plot. So basically you create different bins, and in each bin you count the number of people that lie in that bin or in that bracket. So for the census data, we have these bins in which, for example, the 0 to 10 years age bracket bin, and then the 10 to 20 years, the 20 to 30 years, the 30 to 40 years. Okay? For every 10 years age bracket or age difference, we create a different bin in which we put all the people that fall into that particular age bracket. Okay? So histogram, we can use the hist function to create such a plot, and we will use the histogram plot to again evaluate the random number generators that we have been using. Okay, so we'll see like how can we use the histogram plot to find out more about the behavior of those random number generators that we have been using. So let's get started. Okay, so let's start using this function, the plot function, and along with the plot function, we say that new functions to explore. Linspace is not a new function to explore. We have talked about linspace. Similarly, plot is neither plot nor linspace. They're both not new functions. We have talked about these functions before as well.
So let's repeat. Linspace generates a linear space, a set of points between a lower bound and an upper bound. So you specify the lower bound, the upper bound, and the number of points that you want between the lower bound and the upper bound, including both these points. Okay? So that will generate you a vector. Linspace generates you a vector. So let us generate a vector, say A, and we will generate the vector A using the linspace function. So what do you provide as input to the linspace function? So you provide the lower bound. Say we want points between, say for example, we want points between -5, that is the lower bound, and +5, that is the upper bound. Okay? So we want points between these 2 points, -5 and +5. So the linspace function, it will create a vector of 100 points between -5 and 5. Okay? If you look at the length of A, the length of A is 100. The size of A is 1 by 100. It's a single row vector with 100 columns. So by default, if you do not provide the number of points that you want to generate between -5 and 5, by default the linspace function generates 100 points between these two endpoints. Okay? So this is a closed interval. So I hope you have studied about closed intervals in calculus. So this is a closed interval. It includes both -5 and 5, and the size or length of this interval is 100. So it has 100 points, okay, including -5 and 5. Now we want to use the plot function. We want to use the plot function. The plot function can plot any vector or matrix or a pair of vectors. So you can use it in different ways. For example, if you want to use the plot function to plot a vector, you have some vector and you want to plot that vector using the plot function. So all you need to do is just say plot, just type plot. So we are basically calling the plot function, okay? And we want to plot the vector A and see how does it look. We want to plot the vector A. A is this vector. It is a linear vector starting from -5 going up to +5. It should print a straight line. It should print a straight line. This is a linear vector. So we should have a straight line. Okay? So let's see if we do get a straight line. So when you plot A, this is what you get. Okay? Now on the y-axis we have the values in the vector A. On the y-axis, okay, here we did not specify what is going to be plotted on the x-axis and what is going to be plotted on the y-axis. We just provided a single vector. Okay? We just provided a single vector to the plot function. We said plot and then we provided a single vector. So this way would be this vector. G? क्या चीज किधर से आएगी? This is an error. Font config error, cannot load default config file. An error occurred when we were plotting this function, but this did not affect. ये जब आप plot function को call करते हैं ना, तो ये separate एक window create हो जाती है, figure वाली window, ठीक है? So इसमें वो आपका plot create होता है in a separate window, ठीक है? Now while creating this window there was an error occurred, but still the window was created. So we'll ignore the error and we will just look at the output that we have. Output पे हमारे पास अगर आप देखें ना, x axis पे जो values हैं, these are simple numbers. 1 से आप start लेते हैं और 100 तक आप जाते हैं, ठीक है? So these are basically the index values of the vector A. Vector A में 100 elements हैं. Vector A में 100 elements हैं. So ये पहला element यहाँ पे है, ठीक है? फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां element, उसका आखिरी element ये वाला है +5, ठीक है? So यहाँ आपको +5 की वैल्यू मिलेगी और ये आपके पास है -5 की वैल्यू, पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू.
So on the x-axis you have the index numbers of the elements. You have the index numbers of the elements. And on the y-axis you have the actual values. On the y-axis you have the actual values. ठीक है? अच्छा. So this is what happens when you plot a vector. ठीक है? A single vector. So on the x-axis you have the index values for that vector, and on the y-axis you have the actual values stored in that vector. ठीक है? But usually this is not what we do. Usually we provide separate values for the x-axis and separate values for the y-axis, because we want to plot different quantities along the x-axis and along the y-axis. For example, if you want to create the plot of the sine function, okay? So on the x-axis you have the angle, either in radians or in degrees, and on the y-axis you have the values of the trigonometric ratio sine for each value of the angle. Okay? So say for example we want to create the plot of sine, and we want that plot to be from minus pi to plus pi. We want a complete cycle starting from minus pi to plus pi. So for that we need to first generate the values of angles, and minus pi and plus pi, that means we want the angles to be in radians. So let us redefine A. A would store the angle, the values of angle, and those values are going to start from minus pi and they are going to go till plus pi. Okay? So we are redefining A, and now A represents 100 values of angle in radians in the interval minus pi to plus pi. So starting from minus pi up until plus pi we have the values of the angle in radians. Okay? And we have 100 values for this angle. Now what do we need to do? We need to calculate the sine of this angle. Okay? And we should store that value somewhere. So say for example we want to store that value in the vector B, and vector B would be the sine of vector A. So the sine of each value of vector A would be calculated and it would be stored in the vector B. Okay? So B will have the sine, the sine value for all the angle values in vector A. So now we want to plot both vector A and B. Okay? We want to plot both vector A and B. So how do we do that? So we can do it by using this way. We can say plot A comma B. So first we specify the vector that is going to be plotted along the x-axis, and then we specify the vector that is going to be plotted along the y-axis. Okay? And when you press enter, so you get one cycle of the sine wave. Okay? We can turn on the grid, so we'll see the major grid lines for both the x-axis and the y-axis. So starting from minus pi up until plus pi, we have the sine wave. We have the sine wave, and we have 100 values of the sine wave, the sine function here, and all those values have been joined by straight lines. Okay? So that's why you see this straight curve, the smooth curve, sorry. Now if you reduce the number of points, for example if we say A is equal to length space minus pi to plus pi, and we only generate 10 points between this interval, in this interval. Okay? So then A will have only 10 points. A will be a vector with only 10 points, because in the length space function we specified that for this particular closed interval we only want 10 points. Okay? So let's calculate the sine of this function, and now we can plot it. Okay? So now if you look at this plot,
this plot looks a bit discontinuous. Okay, so there are we can see that there are lines that join these 2 points, straight lines. Okay, so this is a low resolution plot. We can see the discontinuities in the function. Okay, so if you don't want to do that, then you increase the number of points that you want to generate for this function, and when you join those points by straight lines, so then you see those straight lines are very small lines, then you see a very continuous plot. Okay, you should always remember, if you're using the plot function and providing values for the x-axis as well as for the y-axis, then both these vectors should have the same size. Their dimensions should be the same. The dimensions of these vectors should be the same. Okay? If it is different, then you will have problem. For example, let us redefine A. So A now has, say, 20 points. Okay? So I have redefined A, but I have not changed B. I am just going straight for the plot. So now A is a vector of size 1 by 20 and B is a vector of size 1 by 10. The size is different. So now you get an error. Okay? And you don't get any plot. And the error is, it tells you that vector lengths must match. So you have these two vectors A and B, and you are plotting these two vectors. Their lengths do not match. That's why you have an error. So the lengths of these two vectors, they must be the same. They can be row and column vectors, doesn't matter. One can be a row vector, the other can be a column vector, but their lengths should be the same. Okay? So now if we recalculate B as sine of A and then say plot AB, then we won't have that error. Okay? Then we won't have that error. We'll have a proper plot. Now, when you get a plot, you can use this plot in your report as well. Like, you can save it. You can say file, save as. Okay? So you can save it either as Octave figure file, or you can save it as a JPEG file, okay? A PNG file, or TIFF file, a GIF file, or in one of these vector formats. You can use any of these file types to save your file. Okay? So let us say save it in one of these formats. Okay, let me save it in JPEG formats. See if we can save it. Let us call it as figure 1, figure1.jpg. We have saved it. Now let's see if we have this file. So we have this file figure 1. It is a JPEG file. See, it was created just now, 21st June 2022, 9:22 AM. Okay? So when you double click on this file, you'll see the plot. Okay? So you can generate a plot and you can save it for use in your report. Okay, so when somebody asks you to use this plot in your report, and you will need, this is how it works. You generate all these figures and plots, and then you use them in your reports. Okay? So you can save it as a JPEG file or a GIF file or a bitmap or in any other format, and then you can reuse it in your reports. Okay? Okay. Now say for example,
let me close this file and let's get back here. Let us make A as this file, as this vector with 100 values of the angle. Okay? Now let's say B stores the sine of A, the vector B stores the sine of A, the vector C stores the cos of A. So vector B stores the values of the sine function for the vector A, and vector C stores the value of the cos function for the vector A. And say for example we want a plot where we have both the sine curve and the cosine curve. Okay? For one complete cycle we want both the sine and cosine curves in the same plot. Okay? So how can you do that? So this is how you can do it. So we can use the plot function and we can specify multiple plots. So the first is A comma B. On the x-axis we want to have A, and on the y-axis we want to have B. This will create the sine wave. Then we want to have on the x-axis the values of A, and on the y-axis we want to have the vector C. These two pair of vectors, they will create the cos curve, the curve for the cos function. Okay? So the first pair, it is the same, like it creates the sine plot. On the x-axis we have the vector A, on the y we have the vector B. The second one creates the plot for the cosine curve. Okay? And it will be on the same figure. It will be on the same figure. When I press enter, so I'll have two plots in the same figure. Okay? So the first one is the sine curve and the second one is the cosine curve. Okay, is this clear? So you can create multiple plots in the same on the same figure. So you can add another one. Say for example we have another vector D, and say for example D has the values say for example D is equal to sine of 2 times A. So D has the values of sine of 2 times A. Now let us plot all these functions. So we have A comma B, A comma C, then A comma D. Now this one is the sine function, the one in blue. The red one is the cosine function, and the one in yellow, I hope you can see it, this is the D, sine 2A. So we just increased its frequency. We increased its frequency. Now we have 2 cycles of this function, the sine wave. Okay? So by multiplying with the argument theta by 2, we have doubled the frequency. Okay? So now we have 2 cycles of this of the sine curve for this particular function. Okay, so you can use the plot function in this format. Like you can simply give it a vector and it will plot it. You can give it 2 vectors, x and y. So one will be printed along the x-axis, the other plotted along the y-axis.
you must make sure that the size of x and y should be the same. It must be the same, otherwise you won't be able to get any plot. And you can use the plot function in this particular form as well, like you can specify multiple plots, values for the x-axis, okay, then for the y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis, okay. So you can plot 3 functions, y1, y2, y3, or more than 3 functions side by side. You can do that, okay. Okay, now you can also provide a matrix as input to the plot function, okay. So a matrix has multiple rows and multiple columns, okay. So you can think of the row vectors as a separate vector and another row vector as another separate vector. So one will be printed along the x-axis, the other will be printed along the, say, y-axis. Let's see how would this work. So you know, like we have vectors a, b, c and d. We have these 4 vectors, okay. So I'll create a matrix M, and the matrix M, I would create it by appending these vectors to each other, okay. So first I'll have the row vector A, and then I'll have the row vector B, okay. So I have the matrix M. The matrix M has 2 rows and 100 columns, okay. The first row has the vector A and the second row has the vector B. The first row has the vector A and the second row has the vector B. Vector A has the values of the angle in radians, and vector B has the values of the what are those values? The values of the sine of those angles. Okay? Now let's see what happens when we plot M. If we say plot M, what will happen? Okay? How would a matrix be plotted? So let's see. Gee, can anybody explain this plot? So what is happening? Can anybody explain it? Should we get this plot? No. Acha. If you were listening, then you would have been able to make some sense out of it. What are we plotting? We are plotting the matrix M. Matrix M में क्या है? Matrix M की जो पहली रो है वो है वेक्टर A. वेक्टर A में एंगल्स हैं फ्रॉम -π to +π. और मैट्रिक्स M की जो दूसरी रो है वो उन्हीं एंगल्स की साइन वैल्यूज हैं. जो A में B वैल्यू देखिए, B में क्या है? B इज इक्वल टू साइन ऑफ A. तो पहली रो है A, दूसरी रो है साइन ऑफ A, और ये है मैट्रिक्स M. और फिर हम मैट्रिक्स M को प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्लॉट आता है. तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये प्लॉट क्यों आया हमारे पास? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? लाइक वी शुड हैव, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ साइन वेव. ठीक है, तो हमें साइन वेव नहीं मिली, क्यों? ये जो मिला है हमें, ये जो नजर आ रहा है, ये एक फंक्शन नहीं है. दिस इज क्लियरली, दीज आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस. ये 100 फंक्शंस हैं. ठीक है, अब अगर आप प्लॉट फंक्शन को मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो कॉलम्स को प्रिंट करता है. इट टेक्स वन कॉलम एज वन फंक्शन, द सेकंड कॉलम एज अनदर फंक्शन, थर्ड कॉलम. आप अगर देखें ना, यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू है 1 और 2. ठीक है, एंड वैल्यू है 2. तो कॉलम, ये इसमें दो रोज हैं और 100 कॉलम्स हैं. ईच कॉलम इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन. ईच कॉलम इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन. सो पहला जो कॉलम है ना, उसमें -π और साइन ऑफ -π है, तो उसको एक फंक्शन लिया है और उसकी वैल्यूज प्लॉट की हैं अलोंग दी
वाई एक्सिस। सो माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पे होगी और साइन ऑफ माइनस पाई दैट वुड बी क्लोज टू 0, ठीक है। सो वो वैल्यू यहाँ पे होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है, ठीक है। दूसरी वैल्यू फिर माइनस पाई से थोड़ा सा एंगल कम, फिर उसकी साइन की वैल्यू, तो वो आपको ये वाली, उससे ऊपर एक लाइन मिल जाती है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर 0 से आप जैसे एंगल आपका बढ़ता है तो फिर आपको लाइंस यूं मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दोबारा से समझें, हमने प्लॉट फंक्शन को ये मैट्रिक्स M पकड़ाया है कि आप इसे प्लॉट करें। मैट्रिक्स M में पहले हमने एक रो डाली, उसमें एंगल की वैल्यूज थी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, दूसरी रो डाली उसमें साइन की वैल्यूज थी उन्हीं एंगल्स के लिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास एक साइन वेव जनरेट होगी, ठीक है, जो कि नहीं हुई। हमारे पास दो क्या, हमारे पास 100 फंक्शंस यहाँ पे प्लॉट हुए हैं। ये क्लियरली दिस इज नॉट वन लाइन, दीज आर मैनी लाइंस, ठीक है। ये हमारे पास 100 लाइनें हैं, इन्हें अगर आप गिनना मुश्किल है, लेकिन यू कैन लाइक वर्क इट आउट मेंटली कि ये इतनी ज़्यादा लाइनें क्यों प्रिंट हुई हैं। इसलिए प्रिंट हुई हैं कि ये जो प्लॉट फंक्शन है, इसको अगर आप मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये उस मैट्रिक्स के हर कॉलम को फंक्शन ट्रीट करता है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 100 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसने 100 डिफरेंट फंक्शंस को प्लॉट किया है, 100 डिफरेंट फंक्शंस को प्लॉट किया है, ठीक है। सो वी हैव 100 डिफरेंट फंक्शंस, दैट्स व्हाई वी हैव दीज मैनी डिफरेंट लाइंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लॉट फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं, तो जो फंक्शंस आप प्लॉट करना चाहते हैं, दोज फंक्शंस शुड बी एज कॉलम्स इन दैट मैट्रिक्स। अगर आप उसको मैट्रिक्स पकड़ाना चाहते हैं ना प्लॉट फंक्शन को, तो उस मैट्रिक्स में जो फंक्शंस हैं, दे शुड एग्जिस्ट एज कॉलम्स, नॉट एज रोज। यहाँ पे हमने उनको रोज की शक्ल में डाला है, ठीक है, उनको कॉलम्स की शक्ल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए पहले कॉलम में कौन सी वैल्यूज हैं। अगर आप इस वेरिएबल, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे देखें ना, तो पहले कॉलम में ये 2 वैल्यूज हैं, -3.14 एंड दिस इज क्लोज टू 0, दिस इज अ वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, दिस इज क्लोज टू 0। तो अगर आप फिगर में देखें, ये वाली लाइन कहाँ होगी, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है दैट इज -3 पॉइंट समथिंग, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज ये वाला है -1, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है -3 और उसका इंडेक्स 1, दूसरा पॉइंट जो है उसका इंडेक्स 2 और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1.2, दैट इज क्लोज टू 0। तो ये हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन बनती है जो यहाँ से जाती है और यहाँ 0 को टच करती है, ठीक है। दूसरी जो है वो इससे थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि ये वैल्यू -3 इससे ज़रा सी बड़ी है, तो वो ये वाली लाइन होगी इससे ज़रा सी ऊपर, फिर और इससे ऊपर लाइंस ये खिंचती जाएंगी यहाँ तक, फाइनली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे जब एंगल की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो साइन ऑफ 0 जो है दैट इज अगेन मेरे ख्याल में 0 है, ठीक है। साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये 0 के ऊपर एक लाइन होगी। फिर जैसे साइन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, तो साइन की जो वैल्यू है, सॉरी एंगल की वैल्यू 0 से ऊपर जाएगी, तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, फिर आपको ये वाली लाइनें मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। So ultimately, like, you get this figure. So we were trying to explain the behavior of the plot function when you give it a matrix. अब अगर हम वो प्लॉट चाहते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं, तो वो हमें कैसे मिलेगा? So हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर मैं इसको m ट्रांसपोज करूं, ठीक है, या पहले m को चेंज करते हैं, so हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू m ट्रांसपोज। तो रोज को हम कॉलम्स कर रहे हैं और कॉलम्स को रोज कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव 2 फंक्शंस। अब अगर मैं प्लॉट m कॉल करूंगा तो ये 2 फंक्शंस प्रिंट करेगा, एक एंगल को एज अ सेपरेट फंक्शन और एक साइन को एज अ सेपरेट फंक्शन, ठीक है। सो नाउ वी हैव दीज 2 फंक्शंस, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द एंगल। इसने एंगल को a को भी एक सेपरेट फंक्शन लिया है जो कि -π से +π तक वेरी कर रहा है, एंड द सेकेंड वन इज द साइन फंक्शन, उसी फंक्शन का साइन है,
ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर। इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, बोथ आर कॉलम वेक्टर्स, और हर कॉलम वेक्टर में 100 एलिमेंट्स हैं, 100 वैल्यूज हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास वही 100 वैल्यूज हैं, 1 से आप स्टार्ट लेते हैं और 100 तक जाते हैं। बाकी एंगल को भी एज अ सेपरेट फंक्शन ट्रीट किया है, और जो दूसरा हमने प्रोवाइड किया उसको भी एज अ सेपरेट फंक्शन ट्रीट किया है, ठीक है। तो यू शुड नो कि आपका जो प्लॉट फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा अगर आप उसको मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम अगर ये प्लॉट्स देखना चाहते हैं बी सी डी टुगेदर, तो और यूजिंग अ मैट्रिक्स, तो वो कैसे हम करेंगे? तो लेट अस क्रिएट दिस मैट्रिक्स m इज इक्वल टू से, सबसे पहले हम चाहते हैं कि m में हमारे पास हो b पहली रो, फिर c, फिर d, ठीक है। और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और ये हम स्टोर कर देते हैं इन m, ठीक है। सो m में m वुड कन्वर्ट इनटू ये तमाम जो रो वेक्टर्स हैं, दे विल बिकम कॉलम वेक्टर्स इन m। तो पहले कॉलम में हमारे पास फंक्शन b होगा विच इज़ द सिंपल साइन वेव, दूसरे में c होगा, तीसरे में d जो कि डबल फ्रीक्वेंसी वाला साइन वेव है। अब अगर हम प्लॉट m करते हैं तो हमें 3 फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। So we have the simple sine wave, the cosine wave and the sine wave with the double frequency. हमारे पास ये तीनों functions मौजूद हैं। So it's nothing but different syntax. यूँ देख लेना, आप यही प्लॉट हमने इस तरीके से हासिल किया था और इस प्लॉट को हम इस तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। The only difference is कि x एक्सिस पे आपको एंगल की वैल्यूज नहीं नजर आएंगी, वो आपको वो इंडेक्स वैल्यूज नजर आएंगी, ठीक है। 1 से लेके जितने भी उस वेक्टर, इन वेक्टर्स में जितने भी एलिमेंट्स की तादाद है, तो एक्स एक्सिस पे आपको वो इंडेक्स की वैल्यूज मिलेंगी, एक्चुअल एंगल की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस बात की समझ आ गई? सो यू शुड नो हाउ वुड द प्लॉट फंक्शन बिहेव इफ वी आस्क इट टू प्लॉट अ वेक्टर, और इफ वी आस्क इट टू प्लॉट अ मैट्रिक्स, or if we ask it to plot 2 vectors x and y, or if we give it multiple vectors, ठीक है, multiple functions to plot। अगर हम चाहते हैं कि 3 फंक्शन प्लॉट करें, y1, y2, y3, तो कैसे प्लॉट करेंगे? So this is how the plot function works, ठीक है। Now we want to go to the histogram function, ठीक है। So histogram, you should know like what is a histogram, ठीक है। अच्छा, so let us study the behavior, the histogram function and its behavior, ठीक है, कैसे ये बिहेव करता है। अच्छा, so again let us go to the example that we talked about earlier, मर्दमशुमारी की एग्जाम्पल, ठीक है। मर्दमशुमारी में हेड काउंट होता है पूरे मुल्क में, हर घराने में, और फिर वो डेटा आता है, उसको कंपाइल किया जाता है, तो फिर आखिर में उसकी स्टैटिस्टिक्स जनरेट होती हैं कि हमारे मुल्क में नौजवानों की आबादी इतनी है, बूढ़ों की आबादी इतनी है, ठीक है, हमारी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है, अगले इतने साल में हमें इतने घर चाहिए होंगे, इतना पानी चाहिए होगा, इतना गंदम चाहिए होगी, इतना ये सब कुछ। सो वील गो विद दैट एग्जांपल एंड वी विल रैंडमली जनरेट सम डेटा, ठीक है, वील रैंडमली जनरेट सम डेटा। तो हम रैंडमली क्या जनरेट करेंगे? हम रैंडमली एजेस जनरेट करेंगे, लोगों की उम्रें जनरेट करेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जी ये पॉपुलेशन सेंसस हुआ था और सेंसस के नतीजे में हमारे पास ये एजेस आई, लोगों की उम्रें आई, सो हम रैंडमली इनको जनरेट करेंगे, ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे? यूजिंग द रैंड इंटीजर फंक्शन। तो रैंड इंटीजर फंक्शन को हम यूं समझ लें कि एक मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे, ठीक है।
सो मैक्सिमम से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मैक्सिमम उम्र का जो बंदा होगा ना, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग चलें 100-110 साल का कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी हमें मैक्सिमम 100 साल की उम्र तक एजेस जनरेट करनी है, और कितनी जनरेट करनी है, ठीक है। सो लेट अस जनरेट, हम पाकिस्तान की आबादी तो 221 मिलियन है, तो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होगा उसमें तो इतनी वैल्यूज़ होंगी, हम उससे थोड़ा सा कम पे गुजारा करेंगे, ठीक है। सो से हम 20,000 वैल्यूज़ जनरेट करते हैं। We'll create a vector of 20,000 values for ages. ये उम्रें हैं लोगों की। मैक्सिमम जो उम्र हो सकती है वो 100 साल है, तो यूँ समझ लें कि हमने 20,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया है लेकिन हमने एक्चुअल डेटा इकट्ठा नहीं किया, हम यहाँ पे रैंडमली उस डेटा को जनरेट कर रहे हैं। एंड वी वांट टू सी अ हिस्टोग्राम ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो ये डेटा जनरेट हो जाएगा और ये स्टोर हो गया इन द वेरिएबल एजेस। सो एजेस का साइज क्या है, 1/20,000। तो हमारे पास 1 से 20,000 की वैल्यूज हैं, और मिनिमम जो एज होगी दैट वुड बी से 1, मैक्सिमम हमारे पास होगी 100 साल। नाउ वी वांट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन। इन एजेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने लोग 10 साल तक की उम्र के हैं, कितने 20 साल तक की उम्र के हैं, कितने 30 साल 40 साल, ठीक है। इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, लोगों की एज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसको देखने के लिए यू यूज द फंक्शन द हिस्टोग्राम प्लॉट। उसको देखने के लिए यूज द हिस्टोग्राम प्लॉट। हाउ डू यूज इट? सो यू सिंपली से हिस्ट, HIST, हिस्ट, और उसको आप ये वेक्टर पकड़ा देते हैं एजेस। सो वी वांट अ हिस्टोग्राम प्लॉट ऑफ दिस वेक्टर एजेस। हम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं इस वेक्टर एजेस में वैल्यूज की, वो वैल्यूज उम्रें हैं लोगों की, ठीक है। सो लेट्स सी, हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि हम बिन साइज हमारा क्या है। अच्छा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कितनी बिन्स हैं, कितने बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एग्जैक्टली 10-10 साल का गैप है। ये जो पहला बिन है इसमें यानी 1 से 10 साल तक के लोगों की उम्रों की रेंज है। दूसरे वाले में 10 से 20। अच्छा, चूंकि हम रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो आपका प्लॉट, मेरा प्लॉट, ये सब डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मोर और लेस सेम होंगे, क्योंकि अच्छा अब आप इसमें एक और चीज भी देख लेना, इन सब लोगों की तादाद मोर और लेस एक जैसी है, बहुत कम फर्क है, ठीक है। ये जो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है ये रैंडमनेस की वजह से है, लेकिन मोर और लेस इनमें तादाद में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है ना, तमाम एज ग्रुप्स के लोगों की तादाद एक जैसी है। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट नॉर्मल। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली अगर आप अपने जहाँ पे भी ख़ानदान में देखें, ख़ानदान ज़रा छोटा सैंपल है, लेकिन किसी भी गांव में देखें ना, तो जो एवरेज एज होती है सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है। बहुत ज़्यादा बूढ़े भी बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादा तादाद मीडियम मीन की तरफ लोगों की होती है, ठीक है, एवरेज की तरफ लोगों की होती है। आप और किसी चीज़ को देख लें, आबादी में अगर आप देखें ना, लोगों की जो हाइट्स होती हैं, बहुत लंबे लोग भी बहुत कम होते हैं और बहुत छोटे कद के लोग भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग मियाने कद के होते हैं, दरमियाने कद के, ठीक है। सो पॉपुलेशन जो है उसकी ज़्यादा तादाद वो मीन के करीब होती है, एक्सट्रीम्स पे बहुत कम होती है। दैट इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर चीज़ में आप देखें, ठीक है। ये मोबाइल कंपनियों वाले आप लोगों को लेट नाइट पैकेजेस क्यों देते हैं? क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं और नेटवर्क फारिग पड़ा होता है, तो बहुत कम तादाद होती है जो कि नेटवर्क को यूज़ कर सकती है नॉर्मली, नेचुरली। तो वो क्या करते हैं, नौजवानों को झांसा देते हैं कि जी आप लेट नाइट खुल के बातें करें, ठीक है, फ्री, बिल्कुल।
तो आपसे एक पैकेज वो करवा लेते हैं, रजिस्टर फिक्स पैसे आपसे लेते हैं और फिर आप लोग सारी रात गुजार देते हैं गुफ्तगू में. दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल. ठीक है. ट्रैफिक को आप देखें, सुबह सवेरे बहुत कम ट्रैफिक होती है और रात देर बहुत कम ट्रैफिक होती है. दोपहर के वक्त पीक ट्रैफिक होती है. ठीक है. मौसम के एतबार से फिर उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है. बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो तो तब भी ट्रैफिक ज़रा कम हो जाती है. ठीक है. तो नॉर्मल जो कर्व है ना, दैट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. बेल देखी आपने? ठीक है. घंटी, वो भी आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगा, वो नॉर्मल शेप जो कर्व है. तो बेल शेप कर्व जो है ना, उसमें यानी जिस तरह वो ऊंट का या बैल का जो वो हम्प होता है, तो उसके बीच में देयर इज अ हम्प. ठीक है. उभार होता है, साइडों पे वो फिर नीचे बैठ जाता है. सो दैट इज व्हाट नॉर्मल बिहेवियर इज. एक्सट्रीम्स पे हमेशा कम लोग होते हैं, मेजॉरिटी इज मियाना रवी, दरमियान पे होती है. ठीक है. दैट इज व्हाई यू गेट द हम्प. नाउ दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ये जो रैंडम नंबर जनरेटर हम यूज करते हैं ना, ये वाला कहाँ गया, रैंड आई, दिस इज अ यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर. तो ये जो नंबर्स आपको जनरेट करता है, वो नंबर्स उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनिफॉर्म. ठीक है. इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है बिटवीन अ सर्टेन रेंज. इसकी अपनी यूटिलिटी है. लेकिन अगर आपने किसी नॉर्मल चीज को मॉडल करना है तो यू कैन नॉट यूज दिस फंक्शन, बिकॉज नॉर्मल जो चीजें हैं, दे फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दे डू नॉट फॉलो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको मैटलैब जो है या ऑक्टेव, इट प्रोवाइड्स यू विद अनदर रैंडम नंबर जनरेटर. अच्छा, एक तो हमारे पास रैंड आई है, वी हैव अनदर रैंडम नंबर जनरेटर. तो उससे हम से जनरेट करते हैं फॉर एग्जांपल वेट्स. ठीक है. नाउ दैट रैंडम नंबर जनरेटर इज द सिंपल रैंड. ठीक है. ये वाला रैंडम नंबर जनरेटर है. और ये क्या करता है, इसको आप बता देते हैं कि आपको कितनी वैल्यूज चाहिए. सो से हमें 20,000 वैल्यूज चाहिए. ये आपको कौन सी वैल्यूज जनरेट करके देगा, 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यूज. अब आप इसको हम ज़रब दे सकते हैं विद समथिंग. फॉर एग्जांपल, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 120. ठीक है. सो मैं इसको रैंड, ये जो फंक्शन है ना, पहले इसकी देख लें, इसकी आउटपुट क्या होगी. ये रैंड फंक्शन है. बिफोर वी जनरेट एनीथिंग, लेट अस यूज द रैंड फंक्शन. तो रैंड फंक्शन आपको क्या जनरेट करके देता है, 0 से 1 के बीच रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देता है. ठीक है. अच्छा, अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज फिर 0 से लेके 100 तक की हो जाएंगी. ठीक है. लेकिन ये भी आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यूज जनरेट करके देता है. ठीक है. अगर फर्ज किया हम से फॉर एग्जांपल यही एजेस जनरेट करते हैं लेकिन यूजिंग द रैंड फंक्शन, और इस 100 को मैं हटा रहा हूं, तो अब मेरे पास 20,000 का वेक्टर है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच हैं. स्टिल द पॉइंट इज कि अगर आप इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करें ना, तो आपको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी. ठीक है. तो रैंड फंक्शन और रैंड आई फंक्शन, दे जनरेट वैल्यूज विद अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अच्छा, नाउ वी लर्न अबाउट अनदर random number generator, and that is the rand n. ठीक है. rand n क्या करता है, it generates random numbers with a normal distribution. It generates random numbers with a normal distribution. So अगर हम ये ages की जो values हैं इसको generate करें using a normal distribution, this random number generator, rand n, rand normal, n stands for normal, so this would generate random values from the normal distribution. यानी उनकी जो distribution होगी that would be normal. कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूं. अभी ये values आप
जनरेट कर लें। इन वैल्यूज को अगर आप डायरेक्टली देखें ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या एबनॉर्मल है, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल एजेस। तो वैल्यूज को डायरेक्टली देखने से आपको कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है। इनका हिस्टोग्राम प्लॉट करने से आपको तब अंदाजा होगा। नाउ इफ आई प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ दिस वेक्टर एजेस, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई गेट, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन वैल्यू क्या है? 0। दिस इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इज द 0। मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो 0 के आसपास है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट आप जाना शुरू कर दें, फिर उसकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज पे बहुत कम वैल्यूज है, -4 और +4। ये जो एक्सट्रीम्स है ना, यहाँ पे बहुत कम वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिन्स की तादाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिन्स हैं। अगर हम बिन्स की तादाद बढ़ा दें, यानी ये जो हिस्टोग्राम फंक्शन है, इसको वेक्टर के साथ साथ हम एक नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वी वांट 20 बिन्स, ठीक है। तो वहां पे जो बार्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बार्स की तादाद बढ़ गई है। तो नाउ दिस लुक्स मोर लाइक अ बेल। अगर मैं इनकी तादाद मजीद बढ़ा दूं, ठीक है, से ये मैं 40 कर दूं, so now I'll have a smoother bell shaped curve, ठीक है। This is the bell shaped curve. This is the normal distribution. हर चीज जो नॉर्मल होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी होगी, चाहे लोगों की हाइट्स हों, लोगों के वेट्स हों, वजन हो उनके, लोगों की उम्रें हों, तो पीक हमेशा मीन पे करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और बहुत सारे से ममालिक में ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जांपल जापान है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये जो मीन है ये ज़रा शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स अ हायर एज। यहाँ पे आपको पीक मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बूढ़े, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बच्चों की तादाद बहुत कम है, जवानों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल एज सच नहीं है, ठीक है। इस तरह किसी और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, इट इज़ नॉट नॉर्मल। अच्छा, यही आपको ट्रैफिक की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, यही आपको टेलीफोन कॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। जो भी नेटवर्क होता है ना, वो इस पे प्लान करता है। मीन का इसका पता चलना कि 12 बजे हमें पीक मिलती है, दिन के 2 बजे पीक मिलती है, ठीक है, या हमें मल्टी मॉडल पीक मिलती है। दिस इज अ यूनि मॉडल पीक। यूनि मॉडल मीन्स इसका एक मॉड है। दिस इज द मॉडल वैल्यू, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू। इसकी सिर्फ एक पीक है। आपने वो वाला ऊंट देखा है जिसके 2 हम्प्स हैं? सो यू कैन हैव मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यू कैन हैव ट्रैफिक 2 टाइम्स पे पीक करता है पाकिस्तान में से या किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में। एक सुबह के वक्त जब स्कूल और ऑफिस जाने के लिए लोगों की तादाद यानी मैक्सिमम लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। एक छुट्टी के टाइम जब स्कूलों की छुट्टी होती है और ऑफिस की छुट्टी, अगर दोनों एक साथ हों तो एक साथ आपको पीक मिलती है। तो बाहर कहीं जाए ना, वेस्ट वगैरह में, या 9 to 6 जहाँ टाइमिंग होती है, तो एक आपको पीक मिलती है 6 बजे इवनिंग के करीब, 6:30, 6, 6:30, 7, ये करीब पीक ट्रैफिक का टाइम होता है। रोडें जो है ना बिल्कुल जैम पैक्ड होती हैं। दूसरा आपको मिलती है सुबह के टाइम, जब लोग ऑफिस आ रहे होते हैं, स्कूल आ रहे होते हैं, तो 9, 8:30, 9 उस टाइम आपको ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पीक मिली, फिर ट्रैफिक कम हो गया, फिर दूसरी पीक मिली, ठीक है। अच्छा, मकसद यहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना तो ऐसा नहीं है, वो आप किसी और कोर्स में होपफुली सीखेंगे, बट यू शुड, ये एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्कशन ऑन हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम फंक्शन का ये उसकी यूटिलिटी है, ठीक है। सो अब के लिए यही 2 फंक्शंस ही, ठीक है। नेक्स्ट जो उसमें होगा, वी लर्न अबाउट another plot, scatter plot,
उसके बारे में, एंड देन वील यूज द स्कैटर प्लॉट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। और सब प्लॉटिंग, ठीक है, सब प्लॉट से मुराद ये है कि इफ़ यू हैव अ सिंगल फिगर और उस पर आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि एक फिगर पे एक मल्टीपल प्लॉट्स हों, आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास एक साइड पे साइन की कर्व हो, फिर एक सेपरेट ग्राफ पे कोसाइन की हो, फिर एक सेपरेट ग्राफ पे किसी और फंक्शन की लॉग फंक्शन की कर्व हो, फिर किसी और की। सो उसके लिए वी यूज द सब प्लॉट फंक्शन। सो वी लर्न अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लैब सेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूँ यहीं पे। सो यू शुड नो कि रैंड फंक्शन क्या करता है, ठीक है, यू शुड नो द बिहेवियर ऑफ रैंड फंक्शन और रैंड एन फंक्शन, ठीक है। यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फंक्शन का बिहेवियर क्या है। सो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सो देन नाउ यू शुड नो कि इतना पता होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन और एटलीस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे कोई पूछे ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो ड्रॉ द बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। इसकी शेप आपने देखी है, इट्स जस्ट लाइक अ बेल। स्कूल में किसी ज़माने में वो जो बेल होती थी ना, या कहीं और जो बेल होती है, तो ये उस टिपिकल बेल का शेप है, ठीक है, इसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल कर्व और द बेल शेप्ड कर्व। यू शुड रिमेंबर दिस फिगर, इसको अपने जहनों में बिठा लें, ठीक है। बाद में कहीं एमएस करेंगे, पीएचडी करेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे ना, तो ये आपको हर जगह नजर आएगा। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बेल शेप्ड कर्व है, आपके रिजल्ट को भी हम मोर और लेस इस कर्व के मुताबिक लाना चाहते हैं, ठीक है। सो लाइक लोग भी, सारी क्लास लाइक नहीं होती, सारी क्लास नालायक नहीं होती, ठीक है। दिस इज स्टैटिस्टिकली ट्रू। अगर आप लोगों का आईक्यू भी प्लॉट करें ना, तो जो जीनियस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और जो इंतहाई नालायक या कुनज़हन होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। यूजुअली पॉपुलेशन जो है वो एवरेज लोगों पे मुश्तमिल होती है, ज़्यादा लोग एवरेज होते हैं। सो ग्रेड्स भी जब आपके रिजल्ट तैयार होते हैं ना, तो वो प्रेजेंट होते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एज हों तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम with either the instructor, the course, the students, कोई मसला है। और अगर बहुत ज़्यादा F's भी हों then there is also a problem. Usually अगर क्लास का साइज रीजनेबल है, so we should have a normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक शर्त है, 5-6 लोगों में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू नीड अ रीजनेबल साइज्ड पॉपुलेशन का आपको एक रीजनेबल साइज आपके पास होना ज़रूरी होता है, तभी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सैम्पल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, काफ़ी, तब आपको ये कर्व नज़र आएगी और बहुत स्मूथ नज़र आएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा, ये कर्व स्मूथ होती जाएगी। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एजेस का जो वेक्टर है, इसमें 20,000 है ना एलिमेंट्स, इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। 200 कर दिया। अब आप इसको प्लॉट करें, इसका हिस्टोग्राम प्लॉट हम देखते हैं, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, बट इट इज नॉट एज स्मूथ और एज गुड अ नॉर्मल एज दैट वन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मीन नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको मल्टीपल पीक्स में, दिस इज अ मॉडल वैल्यू, दिस इज अनदर, यानी अब ये ट्राई मॉडल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है, ठीक है, या बाय मॉडल तो एटलीस्ट है ही है। अगर मैं बिन्स की तादाद बढ़ा दूं तो फिर सिचुएशन वुड वर्सन, ठीक है। और वैल्यूज की तादाद और कम कर दें, फिर फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज हैं और 40 बिन्स हैं, ठीक है। So this is not a normal distribution. It does not look like a normal distribution. You approach the normal distribution when you have a large population, ठीक है।
So what is large enough? There is a whole theory of large numbers for that. Statistics में there is a theory of large numbers के कहाँ पे कितना बड़ा नंबर जो है वो काफ़ी है और आपके रिजल्ट्स में कितना आपको कॉन्फिडेंस फिर होगा, ठीक है. So this is also an important question. क्लास का साइज़ क्या है या सैम्पल का साइज़ क्या है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है. So अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जो है इन्हीं चीज़ों को ज़रा से प्रैक्टिस करना है. कैसे प्रैक्टिस करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा देते हैं. अच्छा, प्लॉट आपने क्या करना है? प्लॉट करना है आपने प्लॉट एट लीस्ट 4 sinusoids of the form omega t plus alpha, ठीक है. Sin omega t plus alpha. Now omega is the circular frequency, ठीक है. तो आप I hope कि आपने sinusoids को इस फॉर्म में देखा होगा, ठीक है. Sin theta is not the only form. Usually theta को भी converted, we relate it to the angular velocity. So आपकी omega is the angular velocity and t is the time, so that this product gives you the instantaneous value of the angle. ये आपको angle की instantaneous value देगा. और alpha जो है that is the phase difference. That is the phase difference, ठीक है. phase difference क्या होता है? तो बाज़ साइन वेव्स शुरू से स्टार्ट ले लेते हैं, बाज़ ज़रा लेट स्टार्ट लेते हैं, बाज़ उससे लेट स्टार्ट लेते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको हम 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं. क्यों 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं? उसमें जो बिजली आ रही होती है, करंट या वोल्टेज आ रहा होता है, वो प्योर साइनोसाइडल वेव होती है, ठीक है. लेकिन उन साइनोसाइडल वेव्स में फ़र्क होता है एंगल का. तो एक पहले ज़रा स्टार्ट ले लेता है, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, यानी उनमें डिले होता है. फेज डिफरेंस मीन्स देयर इज़ अ डिले बिटवीन दो साइनोसाइड्स, ठीक है. क्योंकि वो जो जनरेटर उनको जनरेट कर रहा होता है ना, तो उस जनरेटर में देयर आर स्टैटर्स एंड देयर इज़ अ रोटर. स्टैटर जो है 3 स्टैटर्स होते हैं, इसलिए आपके पास 3 फेज की बिजली आ रही होती है. जब रोटेटर एक स्टैटर के पास से गुजरता है तो वहाँ पे वोल्टेज या करंट का जो मिकदार है उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है. दूसरे के पास पहुँचने में उसको टाइम लगता है, ठीक है. इसलिए वो जो पहला वाला स्टेटर आपको साइनोसाइड जनरेट करके देता है, उसकी स्पीड यानी उसका जो कर्व है वो थोड़ा सा पहले जनरेट होता है, दूसरे वाले का उससे बाद, तीसरे वाले का उससे बाद, ठीक है. सो देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ डिले इन देयर. सो ये जो आपके पास एंगल है ना अल्फा, दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स दैट डिले, ठीक है. अब आपने क्या करना है? यू हैव टू जनरेट 4 साइनोसॉइड्स. हर एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा शुड बी डिफरेंट, ठीक है. सो एक को आप एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जनरेट करें, दूसरे को दूसरे, तीसरे. टी जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम. सो टाइम शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 और 0 से लेके से 5 या 10 सेकेंड तक आप क्या कहते हैं सिग्नल को प्लॉट करते हैं या 1 सेकेंड तक प्लॉट करते हैं, आपकी मर्जी. बट जस्ट वेरी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो आपके पास मल्टीपल प्लॉट्स आ जाएंगे, 4 प्लॉट्स आ जाएंगे. आपने 4 प्लॉट्स को जनरेट करना है, ठीक है. कैसे जनरेट करना है? यू शुड नो दैट. सो यू शुड हैव 4 वेक्टर्स, से y1, y2, y3, y4, ठीक है. हर जो वेक्टर है दैट शुड रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द साइन वैल्यूज फॉर ईच ऑफ दीज साइनोसाइड्स. और आपके पास सिर्फ एक वेक्टर होगा फॉर द एक्स एक्सिस, दैट वुड बी द वेक्टर t, जिसमें टाइम की वैल्यूज होंगी. सो टाइम की वैल्यूज जो हैं दे शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप अंटिल 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए आप उस फंक्शन को प्लॉट करेंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पहले ओमेगा 1 कुछ और होगी, ओमेगा 2 कुछ और, ओमेगा 3 कुछ और, ओमेगा 4 कुछ और, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस. सो इससे होपफुली आपके प्लॉट फंक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इस पे आप काम शुरू कर दें. मैं आपको वो हिस्टोग्राम वाला काम बताता हूँ.